it's understood. Some names will be given hidden 1, 2, 3, 4, whatever. But the point is, it is only at the output where we can have comparison with the target. So output versus target or the expert's annotation, ये जो है, this will give us the error. You are all familiar with this. I need not to repeat it again and again. The idea that we have been discussing is to start with, we start with, this is the working or the intuition or the concept. Concept ये है that we start with randomly initialized weights. जब मैं लफ्ज कह रहा हूँ randomly, तो it does not mean कि बिल्कुल ही randomly आप इसको initialize करेंगे. There are certain algorithms which allow you to find the weights between 0 and 1. 0 इसलिए नहीं करते because it will give you maximum error और मुश्किल हो जाएगा करना. So it is somewhere between 0 and 1 usually, and you have the most common Gaussian distribution. उसमें से कितनी values आपने select करनी है, that depends upon the in degree and out degree of each of these nodes. ये लफ्ज आप लोगों ने कहीं पढ़े हुए हैं. Randomly initialized weights which are calculated from या estimated या drawn. ये मैं छोटा सा नीचे लिख रहा हूँ. It is not, अगर मैं लिख दूं लफ्ज drawn, इसका मतलब है obtained, drawn from distribution, uniform distribution of 0 to 1, and this depends upon the in degree. In degree का मतलब क्या होता है कि how many arrows are going into a node. If we talk about the data structures, graph theory, analysis of algorithms, how many edges are terminating or ending at this particular node, that is the in degree. And this calculation depends upon the in degree and out degree of the neurons. So this is something which you should just note down. If we get time, we will look at these algorithms. There are a couple of तीन चार ही algorithms हैं. So we will try to actually calculate the starting weights. लेकिन randomly जो है, there is some pattern within the randomness. It is not कि आप coin toss करके नहीं ये ले रहे हैं. There is something going at the back. So you start with randomly initialized weights, and then with each iteration, epoch कह देते हैं इसको, because some of you do not like the word iteration. One epoch may have multiple iterations. So with each epoch, the error is calculated and compared with error of last epoch. So if I say that if E is error
and let's say K is the epoch ये तो स्पॉक वाले स्पेलिंग हो गए हैं CH then error of the epoch K minus the error of epoch K minus 1 is known as the gradient of the error. G. Any confusion regarding this simple statement? किसी भी epoch को आप देखें and compare it with the immediately previous epoch, K minus 1 इसीलिए लिखा है. You will get a value which will tell you whether the gradient is increasing, ये आपको पता है, whether it is almost horizontal, ये मैंने almost इसलिए लिख दिया because you will not get zero gradient. अगर zero आ जाए तो excellent हो जाएगा, but it will be almost horizontal, or whether it is decreasing. These are the three possibilities. Why? Let us draw a quick description of this thing that we have just said. Let's suppose we have epoch 1 and here we have the error. So at the beginning, you will see that the error is going to be definitely a lot because we have randomly initialized the weights. So let's say we start with a large value of error on epoch 1, and as we go on, the error would be going downwards. This is the ideal situation. So if we take the gradient slope of this, it can either be increasing, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं, इसका मतलब होगा we have to move in the other direction. So increasing में we will reverse the direction. ये हमने पढ़ा था in gradient descent algorithm that we have to change whether we are adding the derivative term or subtracting the derivative term. Now this is just the epoch versus error plot. This is epoch versus error. And if it is increasing, we would adjust it in the gradient descent. But here, if it is almost horizontal, जो कि इस हिस्से में हमें मिलेगा, let us say this is almost horizontal. So let me just point an arrow here. Or if it is decreasing, decrease तो ये काफी देर से हो रहा था. Let us say it is decreasing like this, then it is good. We will keep on doing this thing until it becomes almost horizontal. And usually जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ या मैटलैब में जो डिफॉल्ट है, it says that if error is almost horizontal for 6 epochs, so अगर ये k है तो k plus 5 जो है
उसमें ये चेंज नहीं हो रहा, इन 6 epochs में चेंज नहीं हो रहा, then you should stop. So this is one of the stopping criteria. The other is number of epochs, but here we can take the gradient of the error as one of the stopping criterion. So we will stop सर here. Your जी, ये वही वैलिडेशन वाली बात नहीं आ जाएगी? ये एग्जैक्टली ये वही वैलिडेशन है कि यहाँ मैटलैब का डिफॉल्ट है कि 6 epochs पे, लेट मी एक्सप्लिसिटली राइट हेयर कि इसे हम चेंज भी कर सकते हैं. मैटलैब हैज validation stop with 6 epochs. This is just the default. इसे हम 6 की बजाय 2 भी कर सकते हैं, इसको 100 भी कर सकते हैं. It is totally up to the programmer. But we stop when the error is not significantly changing. So we just stop at that point. So k and k plus 5, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि what it means. 6 epochs में अगर उसको कुछ नहीं फर्क पड़ा, then just leave it. So what we do is that for every epoch, we have to compare it with the previous one and calculate the gradient. अब अगर ये एक हम बना लेते हैं इसको right angle triangle, so you will see that this is the rise and this is the run, और जो इसका hypotenuse बनेगा, that will be the slope of the gradient. Now, if there is a significant slope, then this information has to be propagated back to the previous layers so that ये जो error gradient हमारे पास निकला है, this shaded इसको कर देते हैं, this shaded blue is the error gradient. किसी भी successive के साथ आ जाएगा. So this error gradient gives us the information of how much we are drifting away, and the gradient information has to be propagated backwards. So ये जो हमने 2-3 लिखे हैं steps, this is the concept of the gradient descent, error gradient, and propagating it backwards. All right, so if this is okay, then the next point is we have just calculated the gradient of the error कि दो में क्या फर्क आया. But the other significant thing is how many terms. The question is contributed in the output. So if we have this question, इसका color हम change कर लेते हैं so that you know this is a question that how many terms contributed in the output. For example, we have been discussing this from day one that the output of our linear regression is mx plus b, which will give us the output, and we will subtract it from the target,
and calculate error based on this. Now it means that this implies that error depends upon the coefficients, which are m and b. That is why we have to take the partial derivative. अगर error एक ही term से आ रहा होता, it would be direct derivative, but if it is coming from multiple terms within the formula or equation, then you have already seen this, that we calculate the contribution of the term slope in the total error. Contribution is partial derivative, and we see how much of the error is being contributed by the bias. If it is a straightforward single equation, then you do not need to have this thing. Another important point over here, that if we have a more complex equation, अगर हम लिख दें यहाँ, let's suppose m1 x1 plus m2 x2 plus mn xn plus b, then the error will have to be estimated on all of these. So it is going to be a partial contribution by m1, partial by m2, partially contributing, partial derivative. मेरा ख्याल आपको बात समझ में आ गई. So you know that for this, what we will have to do is, with respect to m1 and so on and so forth. G, is it okay, or do you have any questions? This is back propagation section D. पूरा नाम लिख लेते हैं. जी, क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? नाराज हो गए? नहीं सर, समझ आ गया. अच्छा, चले, वेरी गुड. ऑल राइट. सो आप लोग इस वक्त हैं कितने? 40 हो गए. ओ वाओ, दिस इज समथिंग गुड. साल के आखिरी दिन आप सारे लोग आ गए. दैट इज क्वाइट इनकरेजिंग. आपका ये तो नहीं ख्याल था कि आज क्विज होगा? नो सर, चलेगा जाके. हाँ, आज न्यू ईयर है तो आप सुकून से मनाएं. वी विल हैव द क्विज नेक्स्ट ईयर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे. जो आपके लेक्चर्स होंगे, आपका ट्यूसडे को होता है. वी विल हैव द क्विज इन दैट. ऑल राइट. सो अटेंडेंस, विच इज ए कंपल्सरी पार्ट, जल्दी से कर लेते हैं. मोहम्मद साद मीर. प्रेजेंट सर. मोहम्मद साद मीर. सुहेल नासिर. प्रेजेंट सर. हमजा सुहेल भट्ट. प्रेजेंट. हिरा शहबाज. Present. हसनैन सिद्दीक. प्रेजेंट. अब्दुल्ला खान राना. यस सर. साद महमूद. प्रेजेंट. अनस जुबैर. Present sir. उनकी तो एको बहुत आ रही है. माहम अनवार. Present, sir. अमार सर हफीज. फिजान यूसुफ. प्रेजेंट सर. फैजान यूसुफ भी प्रेजेंट है. नजीर शाहिद. यस सर. अली हुसैन. प्रेजेंट सर. सैयद हुसैन इसरार. प्रेजेंट सर. वकास भट्ट. यस सर. अहमद सिप्तैन. प्रेजेंट सर. हमजा इमरान. प्रेजेंट सर. हाफिज सैयद अवैस. हाफिज सैयद अवैस. हसन गिलानी. अब्दुल्ला अरशद.
Present, sir. Myra Ishfaq, Present, sir. Anaba Shafiq, Present, sir. Mohsin Sarwar, Yes, sir. Mahnoor, Present. Mohammad Moiz, Present. Waleed Kamran, Present, sir. Saleha Kareen, Present, sir. Ali Sehran, Present, sir. Nabil Mauz, Present, sir. Jahzeb Abdullah, Present, sir. Fahim Alam, Present, sir. Mohammad Ahmad, Present, sir. Hafiz Jawad, Present, sir. Mohammad Usama, Present, sir. Zahid Saeed, Present. Abdul Moiz Khan, Present. Sikandar Salim, Present. Mohammad Naeem, Afan Arshad, Fahad, Present, sir. Fahad Hassan, Talha Sultan, Ramsha Khan, Present, sir. Present, sir. okay, and Bilal Nasir. Yes, sir. Present. Good. All right, we have 40 students present. That is good. Okay, let me just update your attendance. All right. So now the thing is that if we are considering the neural networks, a broader block diagram अगर हम इसकी बनाएं of a neural network, so we can simply say that it is transforming features इसके अंदर एक लेयर है, दो लेयर हैं, जितनी भी हैं वो हम बाद में देखेंगे, बट दिस इज द सिंपलेस्ट ब्लॉक डायग्राम. The features, if there are n features, we would say that most of them are real numbers. Even if there are strings or other things, we will convert them to real numbers. So from a space of Rn, your neural network is either increasing the dimension or decreasing the dimension. Last time हमने ये देख लिया था that if you have more neurons in the next layer, the dimension will increase. If you have fewer neurons in the next, the dimension will decrease. So neural network can be used for dimensionality reduction or increasing the dimensionality. Therefore, we can just say that Rn gets transformed into an output which could be just one number, or if it is an intermediate output, it will have p dimensions, where p could be 1, if it is just the output, if it is binary output, p could be equal to n, or p may not be equal to n. So if p is equal to n, no change in dimensionality. तो अजीब सी राइटिंग हो गई है.
and if it is not equal to n, there will be some change. मैंने some change लिख दिया है because we may be increasing or decreasing the dimensionality. So this is the underlying intuition. ये सिर्फ अपने ज़हन में एक आपने ख्याल रखना है. Then if we extend it, इसी डायग्राम को if I draw it again but in a slightly different way, we will have the multiple inputs coming in and multiple outputs going out. If you have access to the previous lecture notes, I use very simple um, names or labels. Let's say the inputs are all A's. So it is A1, A2, and A can go up to any number n, and this gets converted into something that we called B, and all the way till B subscript P. So on one side we have the Rn, ये आपको अब तक clear हो गया होगा, and on the other side we have the Rp. So A belongs to this and B belongs to this. The same thing. The point is that when one of these is changed, if I change A2, if A2 is changed, then keep one thing in mind, that from B to BP, all B1 till BP will get affected. G, are you clear about this point, or do you want me to further clear it? सर एक्सप्लेन कर दें थोड़ा. किस तरफ को थोड़ा explain कर दें? All I said was that if this is the input, all the A's are the inputs, and you make some change in one of the inputs, A2 को मैं change कर देता हूँ. न्यूरल नेटवर्क में ये चीज याद रखें कि it is going to affect all of these. सिर्फ ये नहीं होगा कि A2 को change किया तो B2 change होगा. No, it is going to affect. Affect का मतलब है उस पे असर डालना. One change in A2 will affect all of these. All the B's are going to get affected. अभी समझ आया है या मजीद इसको कोई? समझ लग गई सर. All of these. Similarly, it means that when we have to calculate the change in B1, अब ये राइट साइड पे मैं लिख रहा हूं, यहां तो हमने A के बारे में लिखा था. Now we have to see ये तो हमने A के बारे में लिखा था. So on the other side B के बारे में हम ये कहते हैं, if B3 is changed, then it may be due to A1 until AN. All of these.
So we cannot just say that B3 में सिर्फ A3 की contribution थी. If there is a change in B3, then what we have to do is find out the contribution of each one of these terms. So it will be that partial with respect to A1, with respect to A2, A3, AN सबको देखना पड़ेगा. So this is a very important point whenever we are discussing neural networks, that a layer gets inputs, a layer gets activations and gives outputs. एक तरफ चेंज करें, दूसरी तरफ चेंज आएगा, दूसरी तरफ चेंज करें, पिछली तरफ चेंज आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा. So this is a very important segment of the lecture. यहां किसी एक को चेंज करें, यहां सब में चेंज आएगा. बी अगर चेंज आपको कोई मिलता है, then you have to find out the contribution by each one of the participating inputs. Then let us take it one step further. If we have multiple layers, let's suppose this is one neuron and this is another neuron. Color does not make any difference, otherwise ये सिर्फ आपको समझाने के लिए. So we get the input into this. So A1, A2, AN, and then we can have one or two or any number of intermediate neurons, and then we can have any number of, ये थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ so that you know it is different from the diagram above. Let's call these C, और ये हम कह देते हैं J तक जा रहा है. So now what we can simply write is that A belongs to the space N, B belongs to square, and C belongs to J. Dimensions जिस तरह हमने ऊपर लिखा था, they may be same, they may not be the same. इस diagram में I have intentionally made them different so that we know what is happening. Now, you know it very well from your commendable knowledge of calculus that when we have this kind of a situation, it is a sequential arrangement. Sequential अगर ये हम इसको देखें, जी, what is the meaning of the word sequential? एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेयर वेरी गुड. अगर और इसका सिनोनिम जो है, that is chain. Therefore, whenever you have a sequential network and you want to see what contributed to one of the outputs, C3 को क्या मसला हुआ? So first you have to look at the contribution coming from B1 and B2. So what we can do is say that the C3
में B1 और B2 इन दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो आई एम जस्ट राइटिंग BI. अब B1 and B2 are dependent on A1 till AN. Therefore, we will have to multiply this effect with the contribution that BI got from all the previous A's. So let's call them A, K. ये हर एक के अंदर जो है ना ये सबस्क्रिप्ट K है या I है या J है. Be very very clear about these things. So when we calculate all of this, और अगर इससे आगे भी कुछ होता या इससे पीछे होता तो दिस चेन वुड बिकम लॉन्गर. अभी हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, तो वी आर मल्टीप्लाइंग जस्ट टू ऑफ दीज, एंड दिस इज द फेमस चेन रूल of your calculus, and this tells us that what was the effect of changing A on the final output C3. ये जो मैंने चीज अभी बनाई है, this is your favorite chain rule. इससे हम कलर रेड कर देते हैं, and let us bring it into the center. So now you know that this is the chain rule. Any questions regarding this? Calculus में आपने ये पढ़ा हुआ है. I am assuming that you know it, and you know it much better than I do. So हो सकता है मैं कोई मिस्टेक कर दूं, just correct me. मैंने आपको सिर्फ ये बताया सीक्वेंशियल में चेन आ गया है. जब भी चेन आ जाएगा you will have to use the chain rule. So this is the chain rule of derivatives. Any questions? One point to remember, easy हो जाएगा याद करना. चेन में अगर आपने एंड पे कुछ चीज देखनी है, so you have to estimate contributions all along the sequence. और सीक्वेंस को हमने सिनोनिम लिखा है चेन. So you have to estimate contributions all along the sequence. अगर इसमें 50 लेयर्स हो तो यहाँ 50 टर्म्स आपको नजर आएंगी. अगर इसमें 5000 लेयर्स होंगी, यहाँ you will see 5000 layers. So this is a very very important part when it comes to understanding what is happening here. हाँ जी, clear? All clear? Yes, sir. Very good. शुक्र है कि ये आप जल्दी जल्दी समझते जा रहे हैं. आई डोंट नो वैसे समझ रहे हैं या चले, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो लेट्स सपोज we go back to our favorite linear regression, and we discussed the least squares in linear regression. So I'm just going to quickly go through that and see how we derive that thing using the same sort of concepts जो भी हमने ऊपर देखे. Let's suppose you get the input, you have x as the feature coming in. Then if you want, I can use m, or if you want, I can use w. जो आपको पसंद आता है वो लिख लें.
So it is either M or W. इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको बेशक आप बबलू कह दें, it will not make any difference. It is just the coefficient. All right, so all of these get combined into an equation that we call the mx plus b. If there are multiple features, ये जिस तरह से हमने किया था, so if we have this kind of a situation, then all the features are going to be vectors, all the m's are going to be vectors. तो यहाँ सिर्फ चेंज ये आएगा कि it will be vector into vector and you will see some transpose, छोटा सा t लिखा आपको नजर आएगा, because in the end we want to have one scalar answer. So m or x, these could be vectors. यहाँ मैं लेफ्ट पे लिख देता हूँ, इस तरह से लिख देते हैं, could be vectors. Now, the output of this, we said that we will call it the y hat. Hat जरा अच्छा बना देते हैं. Then the next important thing to do is find out the difference between the actual and the predicted. So if I say that y was the actual, then y hat is the predicted. This is just calculating the difference. Whatever is the answer of this calculation, we call it the residual R. So residual के बाकी क्या बच गया? R is what is left between the actual and the predicted, the difference between actual and predicted. And we said that in order to make the derivatives more beautiful, we take the square of the residual as the loss. Just to make it more good looking, when we are plotting it, we take the square. So now we can say that the loss is r squared. R squared is basically y minus y hat squared, and y hat is basically mx plus b. So if I have to write this equation backwards, how would I do it? R square means y minus y hat squared. This is equal to y minus mx plus b squared. G. So this becomes our loss function. You're all familiar with this. Let us not waste too much time on something you have already seen multiple times. इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं so that it stays here. Now, ये y minus y hat जो है, इसे y hat minus y भी लिख सकते हैं. It is totally up to us. सिर्फ एंड पे एक
नेगेटिव साइन का फर्क पड़ेगा. We have also seen that. Now, if you follow Professor Andrew Ng's lectures, what he does is he puts a 1 over 2 at the beginning of this. We will see what is the effect of that, और वो हमेशा लाइट ब्लू में मैं लिखूंगा. So Professor Andrew NG वाली बात जब भी मैं लिखूंगा, आई विल ट्राई टू यूज लाइट ब्लू कलर, कि इस हाफ का फर्क कहाँ पड़ेगा और क्या पड़ेगा. ओके, नाउ सीक्वेंस हमें पता चल गया, चेन हमें पता चल गई. सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग द डेरिवेटिव. वी हैव टू सी द partial of the loss with respect to r, and that is r squared. So when we take the derivative of r squared, 2 idhar aa jayega, it will be simply 2 into r. Then we have to take the derivative of the loss. इस r के बेस पे हमने देख लिया. अब हमने देखना है इससे पीछे हमारे पास ये था पिंक में y hat. So what we have to do is we have to see the loss with respect to y hat. So this is going to be chain आ जाएगी, sequence backwards. So it is going to be the loss because of r. ये ऊपर हमने लिखा हुआ है, दोबारा छोटा सा मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग loss because of multiplied with residual because of y hat. Now if we have taken the y hat with this equation, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें with respect to y hat, then इस टर्म में तो y hat नहीं है, it will go away. इसमें y hat है, raised to power 1, 1 इधर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, so it will be -1. So the answer will be 2r. ये आ गया इस वाले का, multiplied with -1. Are you all following it? ये -1 कहाँ से आया? जी हेलो. Yes, sir, समझ रहा हूँ. रैंडमली पूछते हैं ना किसी को. जी साद महमूद, why did we get -1? साद महमूद से हमारा राब्ता नहीं हो रहा. जी मायरा इशफाक, जी बिलाल नासिर, why did we get why did we get -1? सर वही कह रहा हूँ, रिपीट कर देंगे आप? किसको? मैं आपसे सर, ये पूछ रहा हूँ, आप माइनस मेरे से पूछ रहे हैं. ये तो साइक्लिक रिडंडेंसी कहते हैं इसे कम्युनिकेशन में. आई एम आस्किंग यू, यू आर आस्किंग मी. सर नहीं सर, मैं वो तब अभी अभी आया हूँ क्लास में वापस. मैं एक सेकंड के लिए गया था सर. 1 सेकंड में इतना कुछ नहीं मैं बोल सकता. इट इज एटलीस्ट 10 minutes. Okay, so we get -1, and then we have to see the contribution of this because of the m and the b. So what we're going to do is find out the loss because of the m and b. अब यहां मैं लिखूंगा m and then b. अब ये जो and है, it is not a mathematical thing, it is just for my own
reference that we have to find out these two things for the loss. किसी एक को पहले कर लें, किसी एक को बाद में कर लें. So y hat because of m. ब्लू कलर में contribution of m into the loss will be equal to chain में partial of the loss with respect to r multiplied with contribution of y hat multiplied with contribution of m. So this is going to be in this equation mx plus b, m is coming over here and the derivative chain rule आपको पता है outside the bracket inside the bracket. So inside the bracket it is just x, इस वाले में नहीं आ रहा, so it will be, मैं उल्टा इसको लिख रहा हूं, x यहां से आ गया multiplied with -1 यहां से आया था multiplied with 2r. So this now is the total. सर आपकी से स्क्रीन स्टिल हुई हुई है, वो नजर नहीं आ रहा. क्या हुआ है? सर स्क्रीन स्टिल हुई हुई है आपकी, वो आप जहाँ से बता रहे हैं वो नहीं आ रहा था कि कहाँ सर से डिले बहुत ज्यादा. हाँ तो ये यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है ना. सर अब स्क्रीन पूरी तरह चली गई है. अब पूरी तरह आ जाएगी. आगे सर. ठीक है, ऑल और नन का लॉ इस पे अप्लाई होता है, देयर इज नो पार्शियल. सो व्हाट वी हैव सीन इज दैट using the chain and chain and chain backwards going into the chain, we have seen that we got this equation. स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको करके दिखाया है, इससे ज़्यादा मुझे चेन रूल का नहीं पता, यू नो इट मच बेटर देन आई डू. सो द फाइनल आंसर इज 2r into -1 into x, and what is r, इसे एक्सपेंड कर लें आप. इन द मीन टाइम मैं इसको ऐसे लिख देता हूं -2, इसे ये भी लिखा जा सकता है ना, इट इज इक्वल टू -2 into r into x. Yes, it can be done like this. अब इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं. So this thing, what is r? ये तो कोई जवाब दे दे, what is r? y minus mx plus b. Very good. So r residual जो था, this thing, स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो y माइनस दी y हैट. अब y हैट क्या हो जाएगा? y माइनस mx प्लस b multiplied with -2 on this side multiplied with x on this side. So ये जो एंड में मैंने रेड में लिखा है, this is the final answer. Any confusion, any question with this thing? Let me just scroll back. So -2, this and this and this. Now what happens when we follow Professor Andrew Ng? He says that you just put a 1/2 in front of the r square. जब ये हम करेंगे तो what will become the derivative of r square? 1/2 की वजह से 2 से कट जाएगा, it will just be r. r से पीछे जाएंगे 2 की जरूरत नहीं होगी, उससे पीछे जाएंगे 2 की जरूरत नहीं होगी,
So if we follow Professor Andrew NG, this whole thing will just change into 2 निकल गया minus y minus mx plus b multiplied with x. So this is the version that Professor Andrew NG would be giving you. सर बस वो हाफ ही हुआ होगा उसमें. जी जी, दैट्स इट. उसने ये हाफ लगाया हुआ शुरू में लीडिंग टर्म, वो जरा मैथ को लेस स्केरी बनाने के लिए उन्होंने ये चीज आपको की है. जैसे पहले भी उन्होंने जो चेंज किया था उसके अंदर यही था कि जो 2 होता है या कांस्टेंट नंबर होता है बेसिकली उनको निकाल देते हैं. तो सर ये यस, कांस्टेंट बेसिकली क्योंकि हमारा एक वैल्यू है जिसको हम पहले ही एज्यूम कर सकते हैं तो इस वजह से हम निकाल देते हैं ऑलरेडी. देखिए एक चीज गौर से देखें कि जो स्केलर से मल्टीप्लाई होता है वो सिर्फ आपको ये बता रहा है, वो हर एक को मल्टीप्लाई करेगा. तो जो ग्राफ, लेट सपोज यहां मैं एक डब्बा बनाता हूं, ये एक छोटा डब्बा है, ठीक हो गया जी, और ये इससे एक बड़ा डब्बा हो गया. बेसिकली डब्बा तो है ना, वेदर इट इज ए स्मॉल एरर और ए बिग एरर, इट इज एरर. अगर मैं इसके अंदर लिख दूं ई एंड दिस इज 2e, इट इज स्टिल एन एरर. जब आप इसको ड्रॉ करने चलेंगे, द ग्राफ विल बी स्केल्ड, बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा और कोई फर्क नहीं उसको पड़ेगा. Therefore, a constant leading term can be ignored. ये चीज आप लोग एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में पढ़ के आए हैं, that the constants and low order terms can be ignored when you have to define the order of an algorithm. Big O आप जब लिखते हैं तो उसमें constants की जरूरत नहीं होती. So Professor Andrew Ng is of the view that even if you just remove this 2, it's not going to be affecting your algorithm. Now, the thing that we have to do as the next step here is to copy this whole thing and do it for multiple x. अभी तक हमने एक x को देखा है. अगर आपके पास multiple features हो, then what will happen? जी, anybody, somebody? मल्टीपल फीचर्स हो. हाँ, अगर आपके पास x1, ये तो एक ही x है ना, वो एंड पे एक ही x अप्लाई हो गया. My question is, if you have x1, x2, all the way till xn, then what will be this is a feature vector. Then what will be the equation? सर इसका सिंपली समेशन नहीं हो रहा होगा उस केस में. किससे? तो इसी के साथ जैसे x और x ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक सैंपल है हमारे पास, तो उस केस में समीशन ले रहे होंगे हम क्योंकि वेक्टर है हमारे पास ये. इसकी समेशन इस वक्त कितने बच्चे हैं क्लास में? आई एम सरप्राइज्ड. और थोड़े हो गए. तो जैसे जैसे सूरज ग्रूब होने वाला हो रहा है ना, बच्चे कम होते जा रहे हैं. All right. So you are going to solve it, find it on the internet somewhere and tell me what will be different if you have a feature vector.
what will be the change in this equation. Now coming to the other part of it, ये b वाला जो है इसे quickly कर लेते हैं. What we are going to do is find the loss with respect to b, and this is going to be again loss with respect to r. We will see how much r is affected by the y hat, and then we will see how much y hat gets affected by b. Again, I'm going to write it backwards. When we look at this equation, with respect to b इसका डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ तो आ ही नहीं रहा, so it will cancel out. यहाँ आ रहा है, it is 1. So the last part will just give us 1. Multiplied with, इससे पहले हमने क्या लिखा था? -1. उससे पहले हमने क्या लिखा था? 2r. So this thing that we have now is the equation for the loss with respect to b. And just like before, if we have to sort of write it in a simple manner, -1 into 1 is -1 into 2, this is -2r. इसे अगर आप कंपेयर करें with the other one, the difference is there is no x over here, क्योंकि x के अंदर directly b के equation में कुछ नहीं हो रहा. So this is the loss with respect to b. This was the loss with respect to m, and we have concluded this part. If we were having the suggestions of Andrew and G, only thing that will change is -2r will simply become -r, and that's it. So this is where we are going to conclude today. Question आपके लिए मैंने लिख दिया है, that if you have a feature vector, then how is this equation going to change? और चूंकि फीचर वेक्टर के साथ आपने दोनों निकालनी है, तो मैं यहाँ इसको कर देता हूँ व्हाट विल बी द इक्वेशंस. व्हाट विल बी द इक्वेशंस, और इससे हम कलर चेंज कर देते हैं. अब कुछ ना कुछ तो आपको फनकारी दिखाएं. सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू इन रेड कलर, और ये आपका न्यू ईयर गिफ्ट है. Just read about it and try to come up with a plausible answer as soon as you can. सर वो फीचर वेक्टर के लिए क्या कहते हैं, बी वाली इक्वेशन तो सेम ही रहेगी नहीं? I don't know. और वो क्या कहते हैं, एम वाली इक्वेशन जो है उसके अंदर हम ये नहीं करेंगे कि वो x की जगह x आए कर देंगे और वो फिर सारों को ऐड कर देंगे? Okay, ji, I think there is some error with the internet as well. So that's it for today. Have a very good New Year night, and may Allah bless you with more success and good grades in the next year, 2021. Now we will have the lecture next year. That's it. Thank you and Khuda Hafiz. Last. खुदा हाफिज सर.